morning to one and all. I'm Dr. M.R. Seraphim from Nirmala College, Ranchi, convener of the two-day webinar on pandemic COVID-19, reshaping higher education and green industries. We have with us our chief patron of the webinar, Dr. Sister Jyoti, Principal, Nirmala College, Ranchi. Patron of the webinar, Dr. B.K. Sinha, Principal, P.K. Roy Memorial College, Dhanbad. And our esteemed resource person, Speaker of the Day, Professor K. Srinivas, Head ICT and Project Management Unit, NEPA, Delhi. I welcome our honorable dignitaries and all the delegates. Before we start the day's program, I would like to have the blessings of our dignitaries. With immense joy and exultation, I humbly request our most dynamic, motivating and guiding light, Dr. Sister Jyoti, Principal, Nirmala College, to address this online gathering and ask for the fruitful discussion. Over, Dr. Sister Jyoti. Over to you, Mr. Principal. Please, sister. Okay, thank you, Emma. Wish you all a very warm and blessed good morning. Johar. I feel highly privileged and proud to witness the two-day national webinar jointly organized by Nirmala College, Ranchi, affiliated to Ranchi University, Ranchi, a college with potential for excellence, accredited by NAAC with grade A, in collaboration with P.K. Roy Memorial College, Dhanbad, under the dynamic leadership of Dr. Emma Rani and Dr. B.K. Sinha and their team. It gives me immense pleasure to say that we have been successful in organizing a webinar on the topic Pandemic COVID-19, Reshaping Higher Education and Green Industries. I firmly believe that this lockdown is not a period of rest, but channelizing our energy and efficiencies. Education is essential to change, for education creates both new wants and the ability to satisfy them. The pandemic COVID-19 has made the world come to a standstill. The scenario has changed from moving out for work and resting at house to a corporate mindset of work from home. None of us had even the slightest idea that the invisible microscopic entity would leave us raved and shocked with fear and uncertainty. But one thing that would really be essential to the economy is the effect on higher education. Education is the most important pillar in shaping the future of an individual. Moreover, higher education sets the platform for meeting the job requirements of an individual. But the present scenario has changed our lives to its utmost. We can fight the pandemic only by adapting ourselves to the change created by our new biological enemy. It reminds me of a very famous Darwinian thought that it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but one that is most adaptable to change. We need to explore newer ways and methods for innovation in teaching learning process. The paradigm shift from classrooms to our rooms being converted to the digital rooms are necessary for propagating teaching learning. The online teaching and e-learning resources are the alternatives that are envisaging today. And definitely everyone has to adapt to this new learning process so that education is provided uninhibited, incessantly and unhampered. The green industry would undoubtedly prove to be the resort for reframing the backbone of our knowledge economy. I hope this webinar would suggest newer insight into bringing the newer and useful ways and alternatives to online learning process. It would surely be a little complicated adapting to the technology,
but can surely bring positive change in our lives. Nothing can stop the academia from imparting knowledge to its stakeholders because it can only strengthen and boost our economy and build our nation. I pray and seek the blessings of the Almighty for the fruitful deliberations and uninterrupted support of network. Have a pleasant time. May God bless us all. Thank you. Okay, let me introduce myself. I'm professor of. My name is Professor K. Srinivas. I'm professor of ICT and Project Management Unit. I've been invited by the Professor P.K. Roy College, Dr. Sinha, and other, the coordinators. Fine, friends. We all know very well that the pandemic, as rightly mentioned by the principal, and this is whether we like it or not, it has there in our place, it has there in our country, and people around, and the universities and institutions were closed, and we don't know when they can able to open up, and many other things. So in the process, so I think whether we like it or not, Corona has made some small changes in our the way the process has been done. It is automatically converted, and whether initially we were not so that much comfortable in dealing with online teaching learning, and slowly and steadily the process has been automatically moved on. So the topic which I am planning to talk about is, since already the online and higher education system, both higher education as well as the school education, has already got into this. I intentionally turning off my camera so that I can save certain bandwidth. So what type of, what is the roadmap? There are a lot of confusions, there are a lot of issues in respect to the content, with respect to the pedagogy, with respect to the hardware, with respect to the software. There are many issues are there. And very importantly, people are having a lot of apprehension, saying that, we cannot replace the conventional classroom. Let me try to answer, being the first speaker of this 2 days webinar. I'll try to do my best that what all the basic things need to be done, and how do we prepare the faculty. Very importantly, I must tell you one thing. There are two important things. Number one, teacher is very important in this case, and technology is always secondary. You must be having a tech, because what I am noticing the last almost around 80 days, 85 days plus, when this the pandemic has happened and the lockdown has been enforced. Uh, what immediately was happened is, I have shifted to this mode of this thing, and what I started noticing is, they, everything, whatever the typical face-to-face things have been moved on to the online. So is it is it difficult, or is it easy? This is one of the typical question people used to ask me. So let me try to answer those things, and I'll also try to see that why it is happened. See, I have been using the technology in my teaching learning process since the beginning. So what was happened is, technology is not any separate thing in the higher education. But what is important is how quickly we adopt it, how easily we adopt it, and how do we. And a very important point in this case is, first and foremost thing, we should convince ourselves first. I'm not saying that convincing others will come happen later. First of all, we should convince ourselves. Then only the process can. And because it will be very difficult for many of the teachers are facing a difficulties, because people are thinking that no, it is basically a conventional mode.
So technology is only enabler. Please try to understand. Technology, current days technology is an enabler. Current days technology is a facilitator. But if you want to use the maximum potential out of this current days technology, what is important is the teacher must have proper sensitization. Very, very important. And the teachers must have proper orientation, hands-on orientation, both conceptual as well as hands-on. And very importantly, teachers must have a little bit of an extra effort, because you see, whatever we do in the typical classroom, many of them are used to ask me, अरे नहीं सर, जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं हो रहा है. अरे होगा ही नहीं, कैसे कह सकते हो? क्लासरूम में माहौल अलग है, ऑनलाइन की माहौल अलग है. तो अचानक हमारे ऊपर ये चीज आ गया था. इन चीजों से थोड़ा सा बाहर आने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा, इस कदम उठाने के प्रोसेस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स आप सबको करना पड़ेगा, उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ. ये मेरा लर्निंग पोर्टल है, प्रोफेसर के श्रीनिवास लर्निंग पोर्टल. इसमें आप जब ओपन करके देखेंगे profksrinivas.in, ये मेरा ऑनलाइन टीचिंग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. तो इसमें वैसे मतलब आपको लगा होगा कि सर ने तो कई लाखों रुपए खर्चा किया था. मैं इसमें 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया हूँ, 1 रुपए भी. क्योंकि जो कंटेंट, जो सिस्टम मैंने खड़ा किया था, ये सिस्टम फ्री सिस्टम. और क्योंकि ऑनलाइन में जब मुझे आना था, ऑनलाइन में आने से पहले मैंने ये तय किया था, भाई इस चीज को इस तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे. तो इसके अंदर मेरा स्टूडेंट्स भी है और आप जैसे लोग भी हैं, and you can everyone can able to access it and everyone can able to see that. And there are lot many material. You know what is the technique I adopt? I put all my data in my Google Drive and I'll just get connected to this. That's all. इतने आसान है. No, why I've been trying to demonstrate such kind of this systems, because technology, the current days technology is very much available. You need not create any resources, because Government of India, in the name of digital initiatives of Government of India, like Swayam hai, Swayam Prabha hai, National Digital Library hai, EPG Pathshala hai, और IIT IIMs वालों की जो content है, so much content is available. So when you are teaching in an online, basically there are certain things we need to understand. एक बार मैं आपको बता रहा हूँ. Once you got habituated to teach in an online teaching learning environment, interacting with online, so many things are possible without any difficulty as such. Okay, let me start the day with a positive note of a famous quote by Albert Einstein, which he said, "I do not teach anyone, I only provide the environment in which they can learn." Right? So this is a very important. So it is aptly works in this scenario. Like you can. So let's try to emulate the model. Let's try to emulate the model. अभी तक हमने क्या किया था? Teaching हमारे क्लासरूम में टीचर जा रहे हैं, सिलेबस है इनके पास, करिकुलम है, लेसन प्लान है, लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद कुछ नोट्स दिया, नोट्स डिक्टेट करने के बाद बच्चों, and usme yes, everybody is accountable and that process is perfectly all right, and never denied that. But what is important is, in that process actually we never ask the students to learn on their own. वो system तो है ही नहीं, and everybody is thinking that it is the teacher's responsibility to teach. Absolutely, I completely agree. But when at the formative stages, yes, that is very much required. When it comes to the UG, when it comes to the post graduation, and let's allow the students to learn on their own, and in the process you create that kind of environment which was not there. But thankfully in this online teaching, that processes were there. Let me, if time permits, I'm going to show you how exactly those processes will be done. And there is another important slide which I just want to show in the beginning itself, is a famous book by Dr. Spencer Johnson, which talks about a change and a change management. The name of the book is Who Moved My Cheese?
इसमें स्पेंसर जॉनसन एक बेहतरीन बात कहता है, तो वो ये था कि आप जब नहीं बदलेंगे लोग आपको भूल जाएंगे, यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। तो आप हमारे सामने सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जांपल्स है एम्बेसडर कार, इतना बढ़िया कार था, वो टाइम के मुताबिक वो चेंज नहीं हो पाया एंड धीरे 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 एक्सटेंड हो गया। नोकिया फोन, नोकिया 1150, नोकिया 1120, जिसमें तकरीबन एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद हफ्ता 10 दिन तो चलता था, जब सब जगह सब लोग इसके अंदर मूव कर रहे थे, and it could not have been moved and it has completely extincted now still now उसके बाद Oppo आ गया, Oppo आ गया, Vivo आ गया, Samsung आ गया, दुनिया भर के चीज आ गए, but ये चीज नहीं आ रहा। So what is important is you have to, the change happens whether we like it or not. Anticipate it, monitor the change, adapt to the change quickly, and enjoy the change. That is very, very important. And I've been interacting with many of our faculty, learned faculty colleagues across India, almost daily 6 hours to 7 hours due to several hands-on programs. So basically what everybody say, अरे नहीं यार ये तो मुश्किल है, कैसे कर? See, nothing is impossible. And always I used to tell one thing to them, we all join the teaching profession by choice. Absolutely, nobody is forced us. And thanks to the grace of the Almighty, we have been initially, we learned something, and whatever the and it all comes with experience. And जब तक ऊपर वाले के रहम हमारे ऊपर नहीं रहता, you cannot even teach. Leave about giving a long lectures and other things and all. And very important, it is your hard work, very important. Okay, and you keep on putting the hard work, you are a subject expert, then you should have a capacity to deliver online, deliver in the class and all the things. It is comes with the experience and maturity, many other factors. So what I'm trying to say, if you don't enjoy the change, it will be very difficult. So be ready to change quickly and enjoy it again and again. Whether we thank Corona, whether we say bad about the Corona, it is there, and it is given us an opportunity to see that what was the alternative to the current face-to-face teaching in the higher education. I am not completely, please, I'm not taking anyone's stand saying that, but when given the scenario, but very importantly, the teaching learning process, teaching learning is a rhythmic process. आप सबको पता है, एक बार वो टूट गई, टूटने के बाद दोबारा बच्चों को पटरी पे लाना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पटरी पे लाना काफी बड़ा मशक्कत करना पड़ता है इसके अंदर। सो हम इस माहौल में we are thinking of taking this online route and online applications, online procedures, so that we can start working into much effective manner. And one of the important thing which I just want to say in this case is the technology is there, but the man, the human being who is running behind the technology is the teacher. And please try to understand, without teacher, nothing is going to happen. Teacher is indispensable. Teacher is indispensable, whether it is a face-to-face classroom, whether it is a blended classroom, whether it is an online classroom, the role of a teacher is very important. That's the reason I'm very happy in this workshop. There is a focus on, in this pandemic scenario and in the higher education, what type of things can be imparted. And ultimately is the driver of the class, absolutely, whether we like it or not. And many people are of the illusion that, again I use a word called illusion, simply if you put a videos and learning happens. Learning never happens. Why? Because हमारे क्लासरूम में जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं हम लोग, और उसको 3 लेवलों पे पढ़ाते हैं। पहले हम बेसिक्स पढ़ाते हैं, बेसिक्स पढ़ाने के बाद एडवांस टॉपिक्स में जाते हैं, एंड बेसिक्स एडवांस में कंप्लीट होने के बाद अब जब हम जाते हैं एप्लीकेशन लेवल पे, ये कौन करता है? टीचर ही करता है। और सिंपली करने से, और उसके बाद कुछ बच्चों को, अच्छा हमारे क्लासरूम में बच्चे भी अलग अलग टाइप के हैं, एक तो स्लो लर्नर्स हैं, एक तो एवरेज लर्नर्स हैं, एक तो गिफ्टेड लर्नर्स हैं, एंड लैंग्वेज इज एन इश्यू।
technology is an issue. There are many issues out there. So when a teacher goes to the class, अभी देखिए आप, मैंने पहले से आपसे मैंने पूछा था, सर राजीव जी, मेरा वॉइस और स्क्रीन इज ऑडिबल करेक्टली, राइट? Yes, sir. Yeah, please, sir, please confirm me any problem is there so that I can. So Okay, sir. thank you, sir. So when You are perfectly audible, sir. Thank you, ma'am. Perfectly audible, sir. Yeah. Yes, sir. Because just confirm to me that if there is any problem. So what is when a teacher goes to the class? So all these things the teacher has to see that not only addressing the front benches, there are back benches are also there. So all benches are our benches only. But what is important is how do we bring everyone there? That is the skill teacher has acquired during the course of time in a face-to-face environment. And imparting knowledge in a particular topic means simply not delivering a lecture. So there is a special. So in online teaching learning also, that kind of a process need to be. So the change management is very important. These are the two important things which I want to emphasize it. Okay, before moving on, and there are certain peculiar questions people are asking me. I think I thought of flagging those queries by the teachers before I can move further in this thing. So the first question people are saying that, sir, we have been hearing that Google Meet से पढ़ाने से या Jitsi use करने से, WebEx use करने से, GoToMeet use कर, like ये interactive platforms है. Are they enough for the online teaching? Enough is underlined. Okay, मैं इसका आंसर बाद में बताता हूँ, अभी पहले तो सवाल एक बार देख लीजिए. So लोगों का ये था कि सर जैसे अभी हम GoToMeeting में कर, एक GoToMeeting यूज करके एक घंटा 1.5 घंटा लेक्चर देने से तो सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाता है. ये है, ये इनफ है ऑनलाइन टीचिंग के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए. Number 2, what is the need and role of a learning management system? जैसा Moodle है, Google Classroom है, Sakai है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर. What is the need of a learning management system? Number 3, अब बारी है फैकल्टी. सर हमने सुना था कि आपका पुराने लेक्चरों से फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट, आप बार बार कह रहे हो फैकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द फैकल्टी मेंबर्स सपोज टू डू? वो वीडियो बनाना है. सर वीडियो कैसे बनाएंगे, मुझे कुछ नहीं आता. और सर टेक्स्ट मटेरियल कैसे बनाना है, ये कैसे आता. सर कौन सा पेडागोजी को अपनाना है. अभी हमारे क्लासरूम के पेडागोजी अलग है, ये पेडागोजी अलग है. और सर assessments कैसे करना, how do the faculty conducts the assessments. Okay, and the last but not the least, if these things are not available, how do the faculty conducts the contact with the students? And so let me start with the last query asked by these are all some of the sample queries the faculty members have asked me during course of time. I thought maybe these are all important. If I answer these things, I think that would because in online education, one thing is very important. Online teaching, first and foremost thing, conceptual understanding is very important. Right? After conceptual understanding, the next important thing is hands-on. Because whatever we have been telling you, because right now this is a webinar, not a problem. I'm currently conducting one hands-on workshop where I've been spending more than 6 to 7 hours in a day. It is a guided learning, and after the training is also over, I'll be supporting for 30 days. So why I've been saying all these things? If you want to move towards the online teaching learning, it is simply not a video. किसी और का वीडियो दिखाने से तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते. तो आपको ये देखना पड़ता है कि भाई ये वीडियो किसके लिए काम आ रहा है. ये बेसिक्स पढ़ाने के लिए काम आ रहा है या एडवांस के लिए काम आ रहा है. हमारे बच्चों को इनकी भाषा समझ में आ रही नहीं आ रहा है, और इस भाषा को समझने में, ये समझाने में, ये क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अंग्रेजी में है. मान लीजिए अंग्रेजी समझ में नहीं आते हैं बहुत सारे जगहों पर, कोई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है अंग्रेजी समझ में आना. बाई चांस नहीं आए तो उसके लिए तो मैं क्या करूं, मैं किस टाइप की सपोर्ट करूं. भारत सरकार बहुत काम कर रही है इस मुहिम पे. समझने की कोशिश करो. एक स्वयं नाम की चीज वो लेके आई, स्वयं प्रभा की चीज लेके आई,
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी करके एक बेहतरीन ऑप्शन लेके आई, ई पाठशाला करके लेके आई। ये सारे चीजों को पहले इसके ऊपर जो है सेंसिटाइजेशन देना, इस सेंसिटाइजेशन को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात। सो लास्ट में मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा कभी नहीं होता नथिंग इज वर्किंग। इफ इट इज नॉट वर्किंग देन यू कैन अडॉप्ट दैट। यही मैं कहता हूँ ऑनलाइन टीचिंग में टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। वन इज क्रिएटिविटी एंड सेकंड वन इज इनोवेशन। और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो, कौन कौन से नवाचार, इनोवेशन को नवाचार बोलते हैं, कौन कौन से नवाचारों को साथ में लेके चलते हो। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ दिल्ली में जो चलता है वहां भी रांची में भी यही चीज चलेगा या कई जगहों पर चलेगा, बट चलने वाले चीज कहीं भी चलता है, ना चलने वाले चीज कहीं भी नहीं चलेगा। So you need to look at the local perspective to address these things. Now, coming to the question number 1, and people are asking ये Google Meet को या Jitsi को यूज करके एक भाषण दे देता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भाषण देने से ये ऑनलाइन टीचिंग हो जाएगा। I said ऑनलाइन टीचिंग का एक कंपोनेंट है, ऑनलाइन टीचिंग का ये एक कंपोनेंट है, ये पूरा नहीं है, याद रखिएगा। This is not complete this is not complete thing. It is only one component of that. It is only one component of that. Okay, क्यों ये okay? It is only one component of that. Why? Because this in online teaching, one of the important is because when we move from the face-to-face classroom to the online, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि लोगों को लगा कि हाँ भाई फेस टू फेस में इस टाइप की पढ़ा रहे ताकि जूम वाला आ गया, वेब वाला आ गया। दिस इज ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट। प्लीज टेक इट। कैन यू प्लीज सर, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नंबर 2, सो हमारे नॉर्मल क्लासरूम्स में हम क्या करते हैं, आफ्टर लेक्चर देने के बाद नोट्स देते हैं, बच्चे नोट्स लिखते हैं, या नोट्स के लिए तो हम कहते हैं कि ये लिंक्स एक्सेस करो, वो लिंक एक्सेस करो, वो सारी चीज नंबर 2 में हो जाती है। वो व्हाट इज द नीड ऑफ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक गूगल क्लासरूम इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मूडल इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इन चीजों में होता क्या है, इन चीजों में होता क्या है, इट फैसिलिटेट्स द सेल्फ स्टडी। सबसे अहम बात है ये, इट फैसिलिटेट्स द सेल्फ स्टडी। बच्चे अपने पेस में, अपने टाइम में, अपने स्पेस में बच्चे पढ़ सकते हैं, वो है सेल्फ स्टडी। एंड साथ साथ ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, ये बहुत सारे थ्योरियां ये बता रहे, बच्चे जो है आपस में अपनी जो पीयर से जो कांटेक्ट में आके जो सीखते हैं वो बढ़िया सीखते हैं, उसी को कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। तो ये चीज ये प्रमोट करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात एकदम से बदलना कैसे है, अब आपको आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, भारत सरकार 2017 में स्वयं नाम के एक मूक प्लेटफॉर्म को लेके आए। उसी में उसमें इन्होंने ये कहा था कि 20% ऑफ द क्रेडिट्स स्टूडेंट्स कैन अर्न by opting for those courses in the Swayam platform. I think most of the universities and colleges, they have already adopted this process. And what I'm trying to say that, and you can I think so उसमें सेम चीज आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जो प्रोसीजर्स उसके अंदर जो अपनाया हमने, वही प्रोसीजर्स अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड लाइव इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म्स, टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, बट सब कुछ नहीं है। द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टीचर, द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टीचर, टीचर एंड द स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि बच्चों को भी समझाना चाहिए, टीचरों को भी तो कंप्लीटली पता होना चाहिए। जैसे मैं आप सबको ये बात बता रहा हूँ, ऐसा ही हम अपने विद्यार्थियों तक भी ये बात पहुंचाना है। और बहुत सारे डर लोगों के अंदर भावनाओं के डर है कि पता नहीं ये क्या होगा, ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये मुश्किल है वो मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू दैट। सो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टीचर।
फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंटेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंटेंट। एंड सो अभी तो क्या कौन सा कंटेंट इसको लेना है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, आप लाइव इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा जगह है जिसमें इंटरनेट की काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, तो उसमें क्या करेंगे, तो ऑनलाइन अब ऑनलाइन में स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को ही यूज करना पड़ेगा। वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी कुछ ऑनलाइन कुछ सिंक्रोनस प्लेटफॉर्म्स है, उसी चीजों को लेके, इसलिए मैं कहता हूँ टीचर को बनाना, टीचर को तैयार करना ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अहम भूमिका है, ताकि टीचर को है कभी ये नहीं हो सकता है तो दूसरे ऑप्शन लेके। और कंटेंट इसके बाद में एक और मसला आए कि डू द फैकल्टी नीड टू प्रिपेयर द वीडियोस, नहीं नहीं। अभी आज मैं उस दिन की बात कर रहा था, तो 10 जून 2020 में इतने सारे कंटेंट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो हमारे भारत सरकार के स्वयं ना हो, या स्वयं प्रभा ना हो, या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो, या ईपीजी पाठशाला हो, और इतने सारे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटीज और इतने सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, creative commons attributed material, so much material is available now. So what is important is हम टीचरों को इस टाइप की तैयारी की देने की जरूरत है, अपने क्लासरूम के मुताबिक, अपने कोर्स प्लान के मुताबिक, अपने लेसन प्लान के मुताबिक, कौन सा वीडियो, कौन सा टेक्स्ट मटेरियल, कौन सा ऑडियो मटेरियल अवेलेबल है, और उस चीज को लेके कैसे आना है, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार ये भी बात आता है कि सर ये जो मटेरियल अवेलेबल है जो अंग्रेजी में है, हमारे बच्चे जो है हिंदी के अलावा नहीं जानते, तो उसके लिए तो सिंपल टूल्स अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर स्टूडियो में बनाने से एक क्वालिटी आएगा। भैया घर से तो निकल नहीं पा रहे हैं, घर पे तो पूरा हम लॉकडाउन में है, और बाहर भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, बहुत सारे जो हाइजीनिक मेंटेन करके हम तो वो कर रहे हैं, तो कहाँ स्टूडियो में जाके करेंगे। तो ऐसा सिंपल टूल्स अवेलेबल है, इतना बढ़िया बेहतरीन सिंपल टूल्स अवेलेबल है, उस टूलों को लेके आप अच्छे खासे वीडियोस खुद अपने घर पे बना सकते हो। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से बना सकते हो, जिस भाषा में बच्चे कंफर्टेबल है, जिस स्लैंग में बच्चे कंफर्टेबल है, जो कहने से बच्चों को समझ, जो चीज कहने से बच्चों को समझ में आता है उसको कहने की कोशिश करो। और साथ में मान लीजिए किसी बुद्धिजीवी के जो बहुत अच्छे क्वालिटी का वीडियो है, उसके नीचे अपने वीडियो को दे दो, तो ताकि बच्चे जो है समझ लेंगे। और धीरे धीरे अब देखिए क्या होता है कि 24 घंटे में से कम बच्चों के पास 24 घंटे अवेलेबल है, तो ये सारे तौर तरीके टीचरों को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद यही बात अपने बच्चों तक ले जाना पड़ेगा। और point number 4, and how do the faculty conduct the assessment? Again, there is a big issue is going on in this country. I fail to understand. First and foremost thing, लोग कह रहे नहीं एमसीक्यू कैसे दे सकते हैं, ओपन बुक कैसे हो सकता है। मैं एक चीज में सहमत नहीं हूँ। अरे भैया समझने की कोशिश करो। अब तो बाहर बच्चों को भेजने से तो माँ बाप डर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, इवन टीचर्स भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं कहता हूँ जितना अब देखिए असेसमेंट को बहुत लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। मैं सिर्फ मूडल की एग्जांपल दे रहा हूँ। मूडल एक फ्री ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर 300 प्लस असेसमेंट मेथड्स अवेलेबल है। वो फॉर्मेटिव है, समेटिव है, टीचर रिव्यूड है, ऑटो ग्रेडेड है। अरे इसको लेंगे क्यों नहीं। अच्छा ओपन बुक एग्जामिनेशन ठीक है, कहते हैं सर ये कॉपी कर देगा। अरे अब आप हमारे बच्चों को क्यों शक की नजर से देखते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है। हर लोग सब लोग करना ही चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड there are what I'm trying to say here, there are excellent assessment options, methods are available. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगा। जस्ट इफ यू लुक एट द मल्टीपल चॉइस क्विज के हाँ एक ऊपर क्वेश्चन है,
4 ऑप्शन है की है। तो लोग कहते कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे बताने, ये लोग ऐसे बता रहे। नो, I divide the multiple choice questions into 4 levels. First and foremost, knowledge level questions बहुत आसान है टीचरों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए। एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है टीचरों के लिए भी, बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए भी। To prepare an application level questions, 5 questions in a day, I am taking more than 8 hours. 8 घंटे में ले रहा हूं 5 सवालों को बनाने के लिए, क्वेश्चनों को बनाने के लिए। Okay, next, critical thinking, little difficult, and analytical thinking. So why don't we stop giving questions about the basic knowledge level questions? Go for application level questions. Go for critical thinking level questions. Go for analytical thinking level of questions with the help of Moodle platform. Moodle is freely available, and you can conduct this. So you can see that what is the level of the students. And I see this is one of the alternative. I'm not saying that when tomorrow the colleges are open, everything will conduct pen and paper and all. So I'm telling you a solution which is cost effective. There is no need to invest money. एक रुपए भी खर्चा करने की जरूरत नहीं. If you want, yes, sir, there are proctored, remote proctored examination applications are also available, but which is costly. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं कॉस्ट की इसलिए मैं बात कर रहा था। अब तो पूरा पैसा, पूरा हमारे मेहनत जो है ये कोरोना को मिटाने में तो लगे हुए, तो why should we invest the money when something is freely available for us? And that's what मैं यही थोड़ा सा आप लोगों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के, थोड़ा सा आप इस टाइप की चीजों के ऊपर थोड़ा सा नजर रखिएगा। So online, and last but not the least is the pedagogy. मैं उसके अंदर भी आता हूँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। So live interaction platforms एक component है, और learning management system दूसरा component है। Teachers and preparing a teacher with professional competencies of the teacher, third important है, and encouraging the teacher to use these things, whether giving a hands-on training programs for the faculty members to do this one is the fourth one है, and of course allowing the teacher to think creatively as well as innovatively in this area. This is the fourth. ये सारे components है online teaching learning के लिए. So you know very well that online education, digital revolution is bringing the sweeping changes in the higher education landscape, no doubt about it, especially in the context of this COVID. So now every institution is taking various initiatives in promoting the digital education and teaching digitally. But promotion is happening because I involved in many such activities. UGC got the new online education regulations and rules for the same has been framed, and so that is also very much there. UGC, MHRD, and thanks to the government of India, such a wonderful programs like Swayam hai, Swayam Prabha hai, National Digital Library hai, और बहुत सारे अब माननीय मंत्री महोदय आप ट्विटर में ऑलमोस्ट एवरी डे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी उपलब्धियां हमारे पास है, इसको यूज करने की कोशिश करो। सबसे लास्ट ऑप्शन है द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑल्सो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैव द possibility to revolutionize the higher education sector in the near future. Definitely. Now there is no choice. Now we have to forcefully to adopt it. But while adopting it, what are the steps to be done? So you should have a planning. Now I think I must congratulate Nirmala College and PK Roy College to start this kind of a excellent webinar to talk about these all the issues need to be discussed, and after this what I am suggesting is, and jo faculty interested hai, let them you start one hands-on orientation workshop so that you know they can whatever the concepts they understood, it gets cemented well. और कुछ और बातें मैं ये बताना चाहता, क्योंकि इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि ये मैं कई सारे ऐसे चीजों को देखता हूँ, ताकि ऑनलाइन के नाम से तो कुछ कई जगहों पर मजाक हो रहे हैं, तो ये पहला सेंटेंस मैं इसलिए बताना चाहता था कि ऑनलाइन कोर्स इज नॉट सिंपली a traditional face-to-face course,
replicated on a computer screen. Please try to understand. So it's not a simple traditional face-to-face ka jo course replicated on a computer screen. That's not an online course. So it has got certain goals. It has got certain learning outcomes, and to meeting the course goals and meeting the learning outcomes, the teacher has to put considerable amount, because since there is less face-to-face interaction, so communication and the feedback plays a major role, and the course has to be structured. And what are the important points to be noted down in this case is, so the course always should be whatever ऑनलाइन में आप जो भी देना चाहते हो, इट शुड बी इंस्ट्रक्टर लेड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। तो टीचर को मतलब आगे कमान संभालना है और स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे स्टूडेंट इक्वल नहीं है, बेचारे अलग अलग लेवलों पे बच्चे पढ़ते हैं, तो उन सबके लिए तो ये चीज होना चाहिए। बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत एंजॉयबल वाली बात है, और एक ही चीज में तो दोनों सहमत हैं। तो लर्निंग शुड बी कोलैबोरेटिव इन नेचर, ताकि दूसरों से भी सीखे और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखे। कई बार क्या होता है कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कोई मोबाइल फोन नया फोन लेके आते हैं, और जो हमारे संस्था में जो काम कर रहे हैं उनसे पूछना हमारे लिए बहुत आसान चीज हो जाता है। So what I'm trying to say, that is that kind of a thing can be executed much into this kind of a thing. Okay, and it should support the student pacing also. तो student अपने, क्योंकि हर बच्चा अपने पेस में पढ़ता है, तो जितना भी आप करने की कोशिश, बट आप सहूलियत देना जरूरी है, आपको फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है, and it should support the what I'm trying to say, that collaborative learning, team building and expectations, activities। इसमें क्या है कि कुछ बच्चे जो है, आप मान लो कि आपको ऐसा एक ही टेस्ट देते हो, उस टेस्ट में तो बच्चा नहीं कर पाए, अब मान लो कि 40% बच्चों ने नहीं कर पाया, आप उन बच्चों के लिए अलग से कोशिश कर लो, कैसे कैसे चीज हो जाता है। All these things that is possible with online education. Okay, so in the nutshell, the components basically lesson plan, objectives and outcomes should be very clear. आप जो पेपर पढ़ा रहे हो इसका प्लानिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, उसका आउटकम्स क्या होना चाहिए, और आप एक अप्रोप्रिएट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट करो, ये जो सेल्फ स्टडी के लिए काम आएगा, बच्चे अपने पेस में, अपने स्पेस में, और बच्चों को ये बताना पड़ता है क्लियरली बच्चे क्या करेंगे। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, कंटेंट को कैसे एक्सेस करना है और असाइनमेंट को सही से सबमिट करना है, डाउट्स कहाँ पूछना है, डाउट्स पूछने के लिए तो क्या क्या हमारे पास सहूलियत और सिस्टम्स है, ये सारे चीज बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। बच्चों को बताने से पहले टीचर also should know that what is available right now for us. And secondly, web conferencing tools like Google Meet है, Jitsi, आपको एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, jitsi.org, इसको कोशिश कर लीजिएगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और दूसरी बात है, आपके पास ये है गूगल जीमेल अकाउंट है, आप 100 बच्चों को आराम से ऑनलाइन में पढ़ा सकते हो, एक पैसा उसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं। अब देखिएगा, ये इतनी सहूलियत टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जो मिला है, ये सारी चीज हम कर सकते हैं। अब उसके ये दोनों चीजों के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज कंटेंट। सो कंटेंट में अगेन वीडियो इज वन कंटेंट, टेक्सचुअल मटेरियल इज अदर कंटेंट, audio material is one more content, images are one more content, simulations are available. First and foremost thing, आप कंटेंट बनाने तक मत सोचिएगा, always try to use the material first of all। हमारे बेहतरीन डिजिटल इनिशिएटिव्स है भारत सरकार की, वो स्वयं के कोर्सेस के कंटेंट हो सकता है, स्वयं प्रभा हो सकता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो सकता है, ईपीजी पाठशाला हो सकता है। इसके अंदर के कंटेंट्स को पहले देखो, अपने कोर्स के लेसन प्लान और कोर्स प्लान के मुताबिक कौन कौन सा कंटेंट अपना काम आएगा, ये पहले देखो। और जब एज पर योर लेसन प्लान, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, इफ इट इज नॉट हैपनिंग, मतलब वो अपने
क्वालिटी के मुताबिक नहीं है, देन आप कंटेंट बनाने की कोशिश करो। कंटेंट बनाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं, मैं आपको मेरा साइट का एड्रेस भी आपको दिया था मैंने, उसके अंदर बहुत बेहतरीन सिंपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ऐसा एक बार बनाओ, 2 बार बना दो, तो ये देख के मान के चलिए अब ये एक जमाना आ गया। और एक और बात लोग मुझे बार बार पूछते हैं, सर कल के दिन ये आप ये सारे चीज ऑनलाइन में बढ़ा रहे हो, कल के दिन ये कोरोना मिट गया इस देश में से, तो पूरे दुनिया से मिट गया, तो ये सारे चीजों को क्या करना है, मैं सीधा क्लास में जाऊंगा। मैं कहता हूँ क्लास में जाओ, क्लास में जाके पढ़ाओ, बट क्लास में जाके पढ़ाने से पहले इन साधनों को लेके पहले जो जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ाना चाहते हो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका तो दो। इसी को बोलते फ्लिप्ड लर्निंग, इसी को बोलते ब्लेंडेड लर्निंग। आप अपने अब कब तक आप ही समझाते रहो। मैं समझता हूँ कि 10 से 20% बच्चे ऐसा होता है कि टीचर की सख्त जरूरत है, बट आप जब उच्च शिक्षा में और यूजी में बच्चे आ गए, पीजी में बच्चे आ गए, उसको स्पून फीडिंग मत करा करो, बट एट द सेम टाइम जैसे दिया के चारों तरफ उसको हम हाथ ऐसे लगा के जब जब दिया को लगाते हैं उस टाइम तो यही काम हम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप ऐसा ही रहो उनके साथ, so that you always, and he has his own confidence saying that sir is available, can do it. So this is the answer which I've been giving to all the participants whenever you can use this kind of things. So when जब साथ साथ जब आप हम कोई भी ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी चीज पढ़ाना चाहते हो, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, we need to design our class। जैसे फेस टू फेस में हम डिजाइन जैसे करते हैं, प्लानिंग बना के जो चलते हैं, ऑनलाइन में भी उस टाइप की प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ता है। एक ही फर्क है, क्लासरूम में नॉर्मल फेस टू फेस क्लासरूम में सिर्फ 4 दीवारों के बीच में ही है हम लोग, बट ऑनलाइन में आने के बाद एकदम से एन एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स यू, and at the same time you need not feel shy as long as you convince yourself you want to say, and as long as this is what I've been saying. I interacted with one of the one person in one of the program, and he's told me that he's teaching English grammar in some other vernacular languages, and he was so popular, and so I really appreciate it. I think I must tell you friends, that is the strength of this great nation. Okay, first and foremost thing, you convince yourself. First of all, we think ourselves in our mother tongue, then afterwards we'll comprehend into the language. So you need to, designing of the course is very important. Then comes the content. So when you are talking about the content, as I already told you, that use the existing content which is already available in the public domain. And again there are some issues like plagiarism. Sir, plagiarism तो नहीं होता। अरे भैया हम तो आर्टिकल तो लिख रहे हैं नेशनल में, इंटरनेशनल में, आप किसी का भी हम शुक्र गुजार अदा करते हैं नहीं करते हैं, जिसका भी काम है। तो सिंपल लॉजिक है कि जिसका भी कंटेंट आप लेते हो, जिसका भी वीडियो आप लेते हो, उसका सोर्स मेंशन करो, उसको रेफरेंस दो, उसको कह दो कि सर ये आपके वजह से सर आप ये कंटेंट में यूज कर सकते हो। तो ये कभी प्लेगराइज नहीं होता, हम नाम ही नहीं लेते किसी का और उसको उनके पीपीटी को अपने पीपीटी के साथ चलाता हो, तो तब गड़बड़ वाली बात होती है। When you are always giving a source, when you are giving a reference, and if you attribute to them, and if you can send a polite mail requesting them, allowing them to use their content to facilitate in your classroom, I think this is that this process is completely acceptable. And third important thing is delivery. You need to find out the appropriate delivery platforms, and the delivery platforms, you need to see that how exactly the process. First of all, you need to understand. हम like today morning राजीव जी कह रहे हैं कि सर ये मॉनिटर को बंद करो, वेबकैम को बंद करो, एंड ये कर लो वो कर लो। So ये जो अपने requirement के मुताबिक, when I was joined at 10:55, and I could able to see that gentleman, and suddenly I was asked to start because the coordinators were supposed to introduce to me. There are certain things which is expected in a online environment. I'm not
pointing to anybody here, but when I was coming to your Nirmala College, can I straight away go and give a lecture? No, there is a standard protocols. So these standard protocols, sometimes in a hurry we may skip it, but these things need to be ensured. These things need to be ensured. Okay, so and I introduced myself as I'm a resource person. I was asked to speak, and you know, I was not supposed to say that. So similarly, and there are certain standard protocols out there. We should know that how to manage those standard protocols and transaction. So when you are transacting a course of 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 10 weeks, 20 weeks, so what need to be transacted? Is it simply uploading the content is a child's play? And how do we engage the learner? How do we motivate the learner? How do we encourage the learner? That is very important. We need to see that, and trying to create the assessments, which is the requirement. And of course, there an excellent platform called Discussion Forum. Discussion Forum is a collaborative learning environment and learning environment where the doubts of the students will be answered in a near real-time basis. Even in our Swayam platform also, there is a discussion forum available. So I think this kind of this is again a new culture, friends. Please try to understand. And we have been doing in a face-to-face mode, but since the face-to-face mode is having some difficulty kind of a thing, what is important for is how do we ensure that a typical classroom like scenario can be ensured. And और दूसरी बात, जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे चीज लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज हमने कभी देखा नहीं। जो जैसे बोलते हैं ना उर्दू में तमीज तहजीब एंड लिहाज, लोगों को बताना पड़ता है what need to be done, how to behave in a class when a teacher is saying switch off the monitor and come with a formal dressing and sit properly, speak properly. All these things are part of the system. Which Rajesh ji, my voice is audible and visible clearly on the screen, right? Rajesh ji? Yes, sir. Your voice is clearly. Yes, sir. Your voice is audible, sir. And my screen is Yes, also yes. visible, Your screen right? is visible. Yes, 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 sir. sir. Your Yes, screen sir, is it is. also visible. No problem. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, friends, before moving to the next part of it, let me try to give a small summary of what it is being said earlier to this that I'm going to show you on your screen for a minute. My first important thing is, let me make it little zoom it a little bigger, so that what was the summary, whatever I said till now, and let's I just want to make it summary so that you know it will be easier for you to comprehend. So the first and foremost thing when I talk about is the step one is set up your mind towards the online teaching. ये मैंने आपको पहले बहुत क्लियर तरीके से बता दिया, क्योंकि if you have not set up your mind, it will be very difficult to manage the show. And so first and foremost thing, set up your mind towards the online teaching. Very important component of that. And the second important, there are certain basic broad basic decisions you have to make. What are those broad basics? Number one, about the asynchronous mode, asynchronous platforms, like how much percentage of the time you need to spend on the like Moodle kind of a platform, yeah, Google Classroom kind of a platform, or Google Sites. ये simple है, but बात क्या है कि तो ताकि बच्चे पढ़े, क्लास खत्म होने के बाद भी जो चीज टीचर आप लेक्चर दे रहे हैं उन चीजों को बच्चे पढ़े और पढ़ के अगले क्लास के लिए तैयार होके आ जाए। नंबर टू, सिंक्रोनस मोड ऑफ प्लेटफॉर्म। सिंक्रोनस मोड का मतलब ये था कि आप अपने स्टूडेंट्स जो है कितने परसेंटेज ऑफ टाइम इसके अंदर करना चाहते हैं। तो
सो अभी कितने बच्चों के पास ये सहूलियत है? तो ये वो तय करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द पेडागोजी। सो अपने क्लासरूम की पेडागोजी यहाँ काम नहीं आता है। तो अपने क्लासरूम के जो पेडागोजी है, सो वो तो लेक्चर मेथड है। So that lecture method cannot be worked out here. So you need to adopt a methodology, the pedagogy of methodology of teaching. Either it could be a flipped mode, flipped with blended, and हमारे सामने तो already MOOCs की 4 quadrant approach available है। 4 quadrant approach में क्या क्या चीज है? Quadrant 1 video lectures है, Quadrant 2 e-content है, Quadrant 3 assessments है, Quadrant 4 discussion forum. These are the 4 options are very much available for us, and you can take. So you need to have a clarity about what the kind of pedagogy which is going to be adopted in this class. The next one is assessments. The next important component is assessments. So you need to take a call in the beginning itself. Are we going to use the teacher reviewed assessments? Are we going to take the peer reviewed assessments? Are we going to use the auto graded assessments? Are we going to use this open book kind of assessment? तो ये एंड पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद आप आईटी में एक इंपॉर्टेंट वाली बात है, the more you practice it, the more conceptual clarity you will get, and the more you start teaching it, and you will get different orientations also. Okay, and the fourth important point, define the role of students and teachers. I've been saying in the beginning also all these things. You need to define the role of a student, and you need to define the role of a teacher also. So what role teacher has to play, what role the student has to play, and because this should be online teaching, should be a dialogue oriented class, not a monologue class. बच्चों से सवाल पूछते रहो, जवाब तो ये थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को भी लगेगा हाँ भाई सर ये कह रहे हैं, और जहां जहां रिक्वायरमेंट है आप लाइव में आने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सारी चीज बच्चों को लगता है कि भाई कोई ऐसे हमने चीज मिस नहीं किया था। और इंटरेक्शन लेवल्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म, ये बहुत बहुत जरूरी वाली बात है, क्योंकि बात क्या होता है कि जब तक हम इंटरेक्ट नहीं कर, जो चीज हमें बहुत बहुत आसान लगता है बच्चों के लिए बहुत कठिन लगता है, कुछ चीज जो दूसरों के लिए बहुत कठिन लगता है हमें आसान लगता है। तो ये सारी चीजों को देख के ही थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ओके, नंबर 3, select the learning management system or a platform and try to understand this system first. जो चीज आप सेलेक्ट करोगे वो Moodle हो सकता है, गूगल क्लासरूम हो सकता है, गूगल साइट्स हो सकता है। गूगल साइट से भी आराम से सिंपल अपने कंटेंट को डिसेमिनेट कर सकते हो, असेसमेंट को बच्चों तक पहुंचा सकते हो, डिस्कशन भी हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। बाकी दोनों में तो Moodle में, गूगल क्लासरूम में होता ही है, और गूगल साइट्स में भी ये सारी चीज हो सकता है। तो इनको पहले समझने की कोशिश करो, ये इनका क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस एप्लीकेशंस एंड हाउ डू वी ये इसको किस लेवल तक यूज करें। एकदम से बड़े पैमाने पे यूज करने की कोशिश मत करो, जो ऑलरेडी धीरे धीरे एक स्टेप, टेक वन स्टेप एट ए टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। excellent videos are available. There are many courses are people are conducting, many FDPs are happening. So what I'm trying to say, this is very important to do the need. Next, fourth important thing is about the content. So आपके पास आपके कोर्स प्लान क्या है, आपके लेसन प्लान के मुताबिक, आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक, आपके आउटकम्स के मुताबिक जो कंटेंट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको पहले ढूंढने की कोशिश करिए। सो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट हाउ डू वी फाइंड आउट द कंटेंट एंड व्हाट आर द मेथड्स टू बी डन ऑल दिस थिंग्स। उसमें वीडियो कंटेंट हो सकता है, ई टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो मटेरियल हो सकता है, इमेज मटेरियल हो सकता है, एंड कंटेंट बनाने का काम तो सेकेंडरी में मान के चलो। जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है अंडर OER क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूटेड में बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है, तो उसको हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टेप 5, डिसाइड ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स।
मान लीजिए बहुत सारी चीज लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको कोई शर्माने की कोई बात नहीं, से नहीं आए तो नहीं आएंगे, तो आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए there are many people are available, so try to be in touch with these people and do the needful. Step 6 is addressing the issues and constraints. See, when we start working, then only we'll get failed. When we do commit mistakes, जो mistake commit नहीं किया मतलब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो इससे मतलब आप ठीक है, आप कभी हौसला रखने की कोशिश कर लीजिएगा। ये तो नया मीडियम है, कभी कभार अभी मैं वर्कशॉपों में देखता हूँ लोग तो बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे नहीं यार ये सर ये नहीं बता रहे, वो अरे भैया सब कुछ बता देंगे, एक ही दिन में तो हम आइंस्टीन बनना नहीं चाहते, और एक नया सिस्टम है हमारे सामने, और इसमें इसमें इसे कंप्लीट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड technology enabled teaching learning process in higher education, which is a continuous process, एक दिन में नहीं होता। So what is important is you need to support to each other. तो दूसरों की गलतियां जो से आप सीखने की कोशिश करो, किसी के ऊपर हंसो मत, नहीं आया तो नहीं आता है, तो आता है तो आता है, और first explore all the useful resources, and next important thing is self-paced courses need external push also, that is also very important for us, and there could be device issues also, you can see. So step 7, ये सारे चीजों को करने के बाद what is important for me is and review, fine tune and move ahead. Review, fine tune and move ahead. So you that always should be there, and I will sum up this particular page with a famous quote of great former president of India, of this great nation, Professor APJ Abdul Kalam साहब. कलाम साहब ने तो एक बात कहा था, 3 जबरदस्त बातें कहा. First is FAIL, which is first attempt in learning. सेकेंड थिंग कलाम साहब ने कहा था FEND, हम कहते हैं ना END मतलब मेहनत गई भाड़ में, दिल्ली वाले कहते हैं ज्यादातर, तो ये मेहनत भाड़ में नहीं जाती। END एंड का मतलब एफर्ट नेवर डाइज, एंड दिस ये चीज आदि शंकराचार्य कई साल पहले कहा था, तो वो कह रहा है कि सृष्टि में कोई दोष है, दृष्टि में दोष है, सृष्टि में कोई दोष नहीं है। Perceptions varies from person to person. And next one is no. When you are trying to explain to somebody, and then generally the reaction would be no sir, the places like Delhi can happen, हमारे यहाँ नहीं होता है, you know, ऐसा कुछ नहीं, and of course there are some issues, we know it, but slowly and steadily those issues can be. So my simple humble submission in this case is, if you want to make a positive effort, if you want to make a sincere positive effort, definitely the help will be we will get the help, and we could able to see that things in a much clearer and much positive manner. Okay, so what is to summarize, I'll just take another 5 to 10 minutes, then afterwards I will take few questions from our participants also, because I had to address another class at 12:30. So what is the need of the hour? The need of the hour is, first of all, outreach, second one is continuity, third one is equity. Okay, and so what is and you change your role as a facilitator, very important. Yes, you are a teacher now, this online teaching learning environment, try to be a facilitator. I'll use one nice word in the flipped learning, always हम लोग कहते थे, please mute yourself, please mute yourself, please mute yourself. And what I've been saying as a facilitator means, in a typical conventional classroom, what is the role of a teacher? He is a sage on the stage. Now what I've been saying as a facilitator means you be the guide on the side. So when you and especially, so it is not difficult, it is not rocket science, but what is important is you need to understand the nitty-gritties,
You need to understand the processes, then only the process. So the resources availability, so many resources are available in terms of ePathshala, OER, Swayamprabha, Swayam, and many other things. So to summarize this, let me take you to the action plan. So what would be the action plan? The first one, continue from there you have stopped. आप जहां छोड़ दिया है फेस टू फेस क्लासरूम में, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करो. अब कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं, सर ये व्हाट्सएप भी यूज कर सकता हूं मैं, ये हर चीज आप यूज कर सकते हो, आपको जो यूज कर ना करने की कोई बात नहीं. दूसरी बात है, प्रोवाइड द रीडिंग मटेरियल, वीडियो कंटेंट ऑनलाइन. जहां हो सके तो इवन मैं यहां तक भी आ सकता हूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात छोड़ो, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू. आजकल तो व्हाट्सएप ऐसा सब है, सब जगह पर व्हाट्सएप का भी बात, व्हाट्सएप भी हो सकता है, टेलीग्राम भी हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ लिमिट है, टेलीग्राम में ऐसा लिमिट नहीं है, आप इसको यूज कर लो. प्रोवाइड OER लिंक्स टू द लर्नर फॉर फर्दर स्टडी. मतलब आप एक तो आपने समझाया, कुछ और एक्स्ट्रा स्टडी उनको फर्दर स्टडी के लिए मौका इनको दो. एंड वीडियोस डेवलप करने की कोशिश करो. भाई एक सिंपल टूल्स मैंने मेरे साइट में तो दे रखा है. गिव असाइनमेंट एवरी वीक. सो इस टाइप की, मतलब असाइनमेंट का मतलब ये था कि भाई बच्चे तो टेंशन हो जाए, कम से कम आप ये बताने की कोशिश करो व्हाट आर ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड हाउ दैट ऑप्शंस कैन बी readily useful and helpful for the learners. And as I already mentioned in my presentation, and I'm going to show you my site also once again. It's professorksrinivas.in. This is the platform. It's a very simple and effective and easy to use platform which I've been using for quite some time. And I must tell you, friends, so in this platform there are many things are available, and this is this website address. And if you like the content, you can use it also. And many information. For example, for online workshop resources, I already put something. And the study material and resources in open access, and and video conferencing ethics, and Google Meet instruction. How do we conduct online classes, and so many things are there. And one of the important thing, list of softwares and mobile apps for developing the online video development content. Procedures are also available, some softwares are also available. So my simple request and humble request to all of you is, कोई पैनिक की कोई बात नहीं. And what is important is, आप एक बार बैठ के तय कर लो भाई क्या क्या चीज हमने किया था, क्या करना है, कौन सा सिंपल तरीका है. And so that using those options can, and I've been showing some of the softwares on your screen now, and these softwares are very useful softwares, and आप इसको करने की कोशिश करो, then you can simple, they're all, some of them are very simple software. Audacity ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत काम आएगा, एडिटिंग आप कर सकते हो. स्क्रीन कास्टिफाई, ये भी सिंपल सॉफ्टवेयर है. प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर, इससे अच्छा खासा वीडियो बनता है. स्क्रीन कास्टोमैटिक, फ्री कैम, OBS स्टूडियो, लूम. आप उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में Moodle क्लाउड है, जिनोमियो है, एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फिल्मोरा का. सो मेरा कहने का मतलब, आजकल तो बहुत सारे ऐसे चीज अवेलेबल है. एंड these things are very much helpful and useful for you to move into that. But what is important for me is whatever I'm stopping my screen now, friends. Let me move back to the screen. So what I'm trying to say in this case is, this is a special situation. Try to understand. And every faculty, now you see the medical staff, they are doing their best. The paramedical staff, they are doing their best, and in most of the cases not 24 hours, they are going beyond. And the security staff, the police and all, and the administration, the management, even starting from the honorable prime ministers to the honorable chief ministers to the all honorable governors, to everybody is doing their best. Everything we are trying to, because we never know, there is no standard protocols available for this, how to address this kind of a pandemic kind of a situation, Mahamari kind of a situation. We never seen it. So
as an academic also. As an academic also, instead of sitting and saying that अरे आई तोबा मचाने से हमसे नहीं होता, ये करने से बजाय, what I'm trying to say that do your best whatever the way, and try to get connected with your students, and if you can pat them their back, and definitely the students will definitely will come along with you. I must tell you something. And because they were there at their places, and if a small message come from the teacher, small message in the WhatsApp, and with a small support material, it matters a lot. It matters a lot. I think now I think organizers, I'm requesting, I'll take some of the questions. I think some of them are already posted in the chat box. If any questions specific Yes, sir. to my Yes, sir. question, yeah, I'll take. How to encourage slow learners to be active during the online class? See, If we yeah, have slow I learners. understand your. Yes, Yes, sir. when we are when the first stage child goes to a class, normal class, it takes the child, it takes his own time. So nobody will be a slow learner, nobody will be an average learner, gifted learner. Everybody is a gifted learner. They're all God's gifts, no doubt about it. But what is happening is every child, that the learning process, it takes time, because it all depends on how what they carry. In online teaching, there is an interesting and very effective component called discussion forum. Unfortunately, these things were not encouraged in our typical classrooms. That's what I've been saying, that discussion forum is a collaborative learning environment where the doubts of the students will be answered in a near real-time basis. That is the definition. What I've been using in my class, let me give a small example. Before going to the class, probably next Monday, 1 week before, I upload a reading material, an article. And in my class, all these 5 types of students are there. Introverts are there, extroverts are there, language problem students are there, and we have digital divide students are there, slow, medium, high, gifted, all of them are there. So every student has to go through that article, and he has to, if you understand that article, and keep quiet. If you did not understand the article, you have to support the others learning. And one of the important thing is, I don't encourage the people to show off their, no, I know it. But if you know it, it should support the learning of the others. So what I'm trying to say, this, if you encourage this kind of a process, and very importantly, you see, the students are very techno savvy, and most of them, if you know, student will say that, sir, I don't know about the WhatsApp. If you can give, and it is almost like a WhatsApp in the system, they can use through mobile phone and they can participate. So if you encourage this kind of a thing, and encourage and support this kind of learners, definitely. So there are 2 types of support. One is a teacher centric, teacher is supporting, plus others are supporting, and very importantly, there is a sense of I should say, that the confidence on the system. There is nobody is going to laugh. I'll tell you one interesting thing. When I used to conduct the workshop, I conducted one workshop in PK Roy in Ranchi University. I come very regularly. The UGC HRDC director is a good friend of mine. I used to tell one joke. In my class, you are afford to sleep. You can sleep, no problem. But you are not afford to laugh at others. You are not at all acceptable. Because, I don't know when somebody does know it, and it is the responsibility for me to tell. So this is how we can bring, and I have an evidence also. What is important is, now what is the advantage now? It is the technology is 24 hours available for the student, but unfortunately we made a booth out of the technology. Technology is not a booth, but technology को इतना booth बना के कह रहा, अरे नहीं यार, ये से ये हो जाएगा, उससे, अरे किसी से कुछ नहीं होगा. This is only supplementing and complementing to the teaching learning process. And very important, whether it's a face-to-face class, online class, blended class, kuch bhi class ho, teacher is a central. Without teacher, nothing is going to happen. That I hope I
I answered your question, madam. I'll take one more question because I have another session at 12:30. I had to. There's international seminar I need to address. One more question I'll take. Yes, sir. The another question is that during this pandemic, online teaching learning process is a great step taken. But what about those students who can't have this type of facilities? Like we saw a case in Kerala, a girl committed suicide just because she couldn't attend online classes. So how will these students study? Madam, I'm also looking for a solution from you. If you come across any solution, please let me know. Because I don't Okay, have sir. I don't know. I don't have an answer for that one. I completely agree. Whatever happened Yes, is not good. But at the yes, same time, at the same time, that is always there in this country. I'm telling you, that is always yes, there. yes, But sir. if you come across any good solution, please let me know. मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ ताकि मैं भी बताऊंगा दुनिया को, क्योंकि मेरे Yes, पास sir. ऐसा आंसर्स नहीं है क्योंकि ये मैं but whatever happened is not good. Yes, I think I don't have an answer for that. Yes, sir. This is a question from a participant, sir. That's why. ठीक है मैम. I completely agree with you, मैम. I completely agree with you. Yes, Okay. because वो तो है, वो तो रहेगा. पहले था, अभी है और आगे Yes, sir. रहेगा भी है. ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे संस्थाओं में, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ. मैं आईआईटी में पढ़ नहीं पाया, तो जी, सर. आईआईटी में पढ़ने के लिए तो हमारे पास तो उस टाइम तो साधन नहीं थे और पैसा नहीं था, जी, तो सर. कई सारे चीज हो नहीं पाया. बट आई एम नॉट रिपेंटिंग, सेइंग दैट I did my doctorate from computer science from a wonderful institution, so where I learned many things. So again, everything is there, but I don't have an answer for that one. But yes, Okay. Thank you, sir. Thank you. one last question I can take, please. Okay, sir. The next question is from Payal Prasad, one of our participant. The question is, जी. in a country like India, how do we teach people using this kind of resources when most population does not even have access to basic education? बिल्कुल, बात आपका सही है. उसका भी मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि जिसके पास मैं ये नहीं मैं ये नहीं बिल्कुल मैं जिसके पास आंसर है, क्योंकि ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि लोग शायद पायल प्रसाद जी शायद समझ गए होंगे कि सर जो है मैं भी आप जैसे एक टीचर हूँ. And what I am trying to say here, since see I am a teacher, and of course I have little bit of technological edge also, and at the same time I have been using these things. My purpose is to tell what are the best practices and how we can do it. Yes, it is the responsibility of the policymakers, and of course I must tell you that lot of efforts are on, there is no doubt about it. But हमारा 130 करोड़ की आबादी है, इसमें अभी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी धीरे धीरे लोगों को टर्म्स में आ रहा है. मास्क पहन के चलना, एंड these things it was not there in the system. So I can say something as a teacher. As a teacher, I do my best, and whatever best which has been happening, which I could able to visualize. Yes, I completely agree. पीने का पानी नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, और घर गृहस्थी नहीं चल रहा है, और यहाँ तो साइक्लोन आ रहा है, वहां तो बाढ़ आ गया, दिल्ली में तो 47 डिग्री टेम्परेचर आ रहे हैं, मेरे घर में तो 10,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया, तो मैं कैसे करूं. ये सारे परिस्थितियां परेशानियां तो है, मैं मना कभी नहीं कर रहा. बट एट द सेम टाइम yes, as a teacher I confine my role into that level, that yes, whatever best it can be happen from your side, you can do it. That's what I said no in the beginning when I said कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि टीचरों ने सर ये सारी चीज अवेलेबल नहीं है, क्या करना है. मैंने कहा था कुछ मत करो. मैं उसके दूसरे में जवाब नहीं दिया था. Now I'm telling you the answer. My answer is, if you don't want to use the technology, if the students doesn't have a tech, just be relaxed. Do yoga 2 hours in the morning. Do morning walk, maintain the social distance, हाथ अच्छा खासा 4-5 बार धोना, और अच्छा खाना खाना, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना. ओके, एंड शाम को अगेन 2 घंटे का योगा करना है, वॉकिंग करना है.
एंड जहां मौका मिलता है तो बच्चों से बात करना, बच्चों से बात करने का भी मन नहीं करता को, नो प्रॉब्लम, एंड लेट्स वेट, थिंग्स विल हैपन. बट एज a teacher, I myself will take all these things. So I'm saying that there is no standard solution for everything, especially in teaching. Now I'll just tell you something. Today morning my class started at 8:45. Till 12:30 I've been speaking just now, and again having a quick bite of roti, and I had to jump for my next class. This will go up to 6 o'clock. And what I'm trying to say, all these things, nobody forcing me. I voluntarily doing my best, because I said this is a special situation. It is my responsibility as a teacher, as a senior teacher, to share my thoughts, to share my exposure, to share my experience, so that if I can able to convince at least 10 such people, think positive, everything get positive. And don't think that ये नहीं हो सकता है, but ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. And there are situations where I taught everything like a Gurukul system, and all the things are very much possible. And thank you very much for giving me this opportunity, and to the organizers, to my good friend Professor Brij Kishore Sinhaji, and the Nirmala College management, and all the learned colleagues. Thank you very much. And if you have any doubts, you can share my my website is there, and other things are there. And thank you very much. I'll stop it here because I have a class at Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Professor K. Srinivas, sir, Head ICT and Project Management Unit, MHRD, Nepal, Delhi. Thank you, sir. You have enriched this session. We are indeed grateful for you, for your the share of knowledge and giving your precious time to us. Thank you very much, sir. And sir, we would like to have you again. I also thank our principal, Dr. Sister Jyoti, Nirmala College. Thank you very much once again to all of you. And now starts the session break. Thank you very much. We will be meeting you, again thank at 1:30 for the technical session. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sister. I am Dr. Emma Seraphim, convener of this webinar, and I welcome all the delegates back to the technical session. May I ask Dr. Snehlata Singh to present her paper on reshaping of education system with special references to RLSY. Snehlata yes. ma'am. Thank you, Yes, ma'am. yes. You are here. We welcome you. Please share. Yes, please share your screen and you can start presentation. Okay. It's my great pleasure to present here to say something about COVID-19 and reshaping of education system in present lockdown periods and the closure periods. My topic is COVID-19 reshaping of education system with a special reference to Ram Lakhan Singh Yadav College, Ranchi. तो ये मैंने अपना ही कॉलेज को उठा करके लिया है कि हम लोगों ने क्या क्या अपने कॉलेज में रीशेपिंग की कोशिश की है करने को. द रीशेपिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट जो है बहुत जा रहा है. गवर्नमेंट हैज कम अप विथ ई लर्निंग प्रोग्राम टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इन दिस एरा ऑफ social distancing and the lockdown condition. Here school college closed, so the e-learning is the only option to the gap the bridge the gap. This new learning is more interesting, interactive and enjoyable as compared to traditional chalk and the board method. This learning is the more interesting, interactive and enjoyable क्योंकि इसको मैंने observe किया है. I also observed these three things: interesting, interactive and enjoyable. क्योंकि हमने देखा है कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स नहीं आते थे, these all students, not all, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया में भी रहते हैं, तो अर्बन एरिया में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी के सभी एकदम जूम से या व्हाट्सएप से जिससे भी हम लोग जोड़ना चाहते थे, हम टीचर्स तुरंत जुट जाते थे या बहुत खुश रहते थे. और दे आल्सो आस्क देयर प्रॉब्लम,
and also discussion, जितने भी तरह का है ये बहुत देखते थे कि इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव एंजॉयफुल रूप में ये हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट यहाँ I am going to show a case study on education system of RLSY College Ranchi after implementation of the lockdown. जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को यूज किया अपने स्टूडेंट्स बेनिफिट के लिए वो थे, फर्स्ट वन इज द गूगल मीट, सेकेंड वन इज द गूगल Zoom meeting, then the third one is the WhatsApp, fourth one is the Radio Khanchi of the Ranchi University, and the fifth one is the YouTube. That one is our own college channel, RLSY College channel. तो ये हम लोगों ने 5 प्लेटफॉर्म को यूज किया फॉर द स्टूडेंट्स बेनिफिट्स के लिए और हर रूप में यूज किया, फॉर थ्योरी, फॉर वाइवा, for discussion, for assignment, and so on. So in the upcoming slides, I will be showing you how teachers and students were connected with each other for performing various activities like online virtual classes in the form of theories or practical, or the group discussion, examination conduction, viva voice, etc. And some extracurricular activities like e-farewell, poster presentation, essay writing, etc. and etc. were also organized during lockdown periods to reshape the education system. Then next, so the digital education appears to be viable solution to fill the void for classroom education during lockdown and the closure periods. The educational institutions in India from school to universities use this present adversity as a blessing in major part of the learning process. ये हमारे लिए एक blessing के रूप में हमारे सामने ये digital जो teaching methods है हमारे सामने उपस्थित हुआ है for all learners in the future. Although there are lot of drawbacks to this system, मैं थोड़ा सा mention करूंगी कि क्या-क्या drawbacks है. First one is this system works in urban area, क्योंकि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि रूरल एरिया के स्टूडेंट्स ठीक से नहीं जुट पाते हैं, तो हम लोग व्हाट्सएप के जरिए उन लोगों से हम लोग कांटेक्ट करते हैं. अर्बन एरियाज स्टूडेंट्स, अर्बन एरियाज ओनली स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरिया फेस्ड a lot of problems due to network problem. फर्स्ट तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी है कि जिसके कारण उन लोग जुट नहीं पाते हैं. Second, the written subjective examination can't be conducted online. It is very much problem है कि हम लोग written 3 hours का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करने में हम लोग इसमें असमर्थ होंगे. Yet it proved as very fruitful methods of teaching and learning. जितना भी इसका ड्रॉबैक है, लेकिन आज के लिए तो ये हमारा वरदान है. अगर ये नहीं रहता तो हम लोग क्या करते. सभी टीचर सोचे कि व्हाट कैन वी डू इन दिस सिचुएशन. तो ये हमारे लिए आज की सिचुएशन में एक ब्लेसिंग तो है ही, और सम इसका बहुत सारे फ्रूटफुल है, बहुत सारे रीजंस है. सम ऑफ द रीजंस आई एम मेंशनिंग सम ऑफ द रीजन हियर. हैज नो फिजिकल बाउंड्री. अब स्टूडेंट्स को नहीं हो रहा है आज तो कॉलेज नहीं जाने को मन कर रहा है. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितने कॉलेज में नहीं रहते थे क्लासरूम में हमारे कॉलेज में, उतने यहाँ आकर के जुट जाते हैं. तो हैज नो फिजिकल बाउंड्री. मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव, जो मैंने भी इसको पहले भी जिक्र किया था. स्टूडेंट्स कैन लर्न इन देयर होम एज क्लासरूम इन देयर कंफर्ट एंड द सेफ जोन मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग. जैसे आज हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो अब तो सोशल डिस्टेंसिंग का समझिए टर्म इज चेंज्ड, पर्सनल डिस्टेंसिंग, क्योंकि लॉकडाउन इज रिमूव नाउ. स्टूडेंट्स कैन गेट ई बुक इन द फॉर्म ऑफ द PDF. यहाँ जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को होता है कि किसी भी बुक को लेना हो तो ये लोग PDF के फॉर्म में दे कैन गेट द बुक्स, एनी बुक्स इन द फॉर्म ऑफ द PDF. At last I want to say that COVID-19 affect drastically on education sector, resulting imbalance in its calendar schedule. Yet we all educators and learners did not lose our patience and always we were trying to do the best for reshaping the education system for benefit to our students. So COVID-19 proved an agent for
booming digital education system, and thanks to Corona for preparing us, especially me for e-teaching, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था e-teaching के बारे में. Then thank you. Thank you for this beautiful presentation. You have rightly connected this pandemic COVID-19 as an opportunity and as a challenge for us. Thank you Yes, very yes. much. But only one thing I want to mention, that you were presenting in PPT and screen share, maybe you have not shared your screen with us. So we were very much rueful by not seeing your PPT. But anyway, thank you very much, ma'am. It was a very nice presentation. Any question? Delegates, if you have any question, you may ask. In chat box, Dr. Manisha, is there any question in the chat box? Dr. No, ma'am. Anjali, Screen No, share. no, ma'am. is There there is any? no question, ma'am. Hello. Hello. No question. Okay, thank you. Good. Then I MRD, there will are no move to questions. another presenter. Yes, yes. Thank you. Thank you. Then I will move to another presenter. That is Mr. Kartar Singh. Will be presenting paper on prospects for professional enhancement of teachers using e-learning tools. Sir, over to you. Hello. Kartar Singh, sir, over to you. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, sir, please. Okay, ma'am. Okay, You thank are you. audible, sir. You are audible. Okay. Okay, thank you, Okay. ma'am. Firstly, I would like to congratulate the whole team for organizing such a wonderful session to learn new things related with e-learning tools. My presentation on the topic prospectus of professional enhancement of teacher using e-learning tools. COVID-19 pandemic has affected the whole education system worldwide. In an attempt to contain the spread of COVID-19, education institutions were closed down across the globe. But this unprecedented step failed to put brakes on teaching learning activity. Here, technology comes in handy. Many tools, apps, and digital platforms which have so far gone unnoticed and untapped were immediately bring back to keep teaching learning process visible. There are different tools which a teacher can use to learn new activity, and the different e-learning tools are Google Classroom, WhatsApp, Zoom app, Google Drive, WebEx, Telegram, eParsala, Microsoft Teams, etc. Firstly, I would like to show something about Google Classroom. It is a web service which is designed for schools and colleges to hold online classes. With Google Classroom, the learning process becomes easier. Students can post their queries and receive answers from teachers and online students. Similarly, the most popular app is WhatsApp. A teacher can use WhatsApp to set up communication with their students, and this app is very useful with their leading features like we can send video lecture, we can also send audio lecture, we can do group chats with the students, and we can answer the query raised by different students related with their topic. We can also do video calling, and a conference call can be done by the teachers with their students. Next, we have eParsala. It is a portal developed by CIET and CRT. It hosts educational resources for teachers, students, researchers, and educators. The objective of this object is easy access to digital books and the creation of digital infrastructure as a utility
to every citizen, and we can also improve quality of education. We can get notes from each parsala and later with different topics. Then we have another popular app, Zoom app. It is a cloud-based video conferencing platform which we mainly use for video conferencing meetings, audio conferencing, webinar, and live chats. This app is the leader in modern video conferencing platform. Now the next one is Telegram. It is also a cloud-based instant messaging and voice over service. It delivers messages faster than other applications. It lets you access your messages from your multiple devices. It also provides the facility of creating channels. Now, I would like to show some benefit of e-learning. E-learning saves times and money. With online learning, students can access content anywhere and anytime. It is also cost effective. It saves the substantial amount on travel and accommodation cost of both students and instructors. It allows learners to choose their path and navigate at their own pace. Then, online learning provides consistent and standardized training every time. Unlike classroom teaching, with online learning, students can access the content an unlimited number of times with the recording feature. Student can play the recording again and again, and if he find something very difficult, then he can learn again and again. E-learning is also the way to provide the quick delivery of lesson. As e-learning is a paperless way of learning, it protects the environment to a lot of extent. You, you are able to link with various resources in several varying formats. Through discussion board and chat, students are able to interact with everyone online, and also students can clear their doubts if any. E-learning also has a positive influence on an organization profitability due to wide set of benefits it gives you students. E-learning has become quite popular and appreciated among all students. And at last, the conclusion is technology is sure to add the much needed strength to teacher learning experience. Thank you. Thank you very much. Yes, and thank you, Mr. Kartar Singh, for your beautiful presentation talking about tools of e-learning and teaching. Thank you very much. Ma'am, Any questions? please clear one thing. The presenter have to fill the same feedback pro forma you posted in the chat box Yes, because yes, you have to. uh, You have to say. that topic name is For- not there in the feedback pro forma. But you please fill it up. Your topic is with us in the Okay, WhatsApp ma'am. group Okay. as well as in the technical session list. Your topic is with us. Yes, it Okay, ma'am. is. Okay. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Any question from the presenter? No more question. No question. Okay, thank you. Then we will move to next presenter. Our next presenter will be Dr. Sunita Bankira. She will be presenting her paper on online classes, substitute of regular classes during COVID-19. Ma'am, are you here? Dr. Sunita Bankira. Anyway, start with it. My topic for discussion is online classes, substitute of regular class. Since this online class has been in our regular practice since COVID has started, the coronavirus pandemic and the ensuing lockdowns has forced schools and colleges across India to temporarily shut, and its specific move had created a big gap in the education system, despite the center and the state government are doing their best to provide support for e-learning and online education. Several schools and colleges in the country are now starting to provide online classes to help students continue their education from the comfort of their home.
However, many of them have technologies used which are enabling online learning through audio-video links like Zoom classes, Skype classes, WhatsApp, Cisco WebEx, and Microsoft techniques and teams are being used. But what I want to say is that as soon as we have seen that कोविड जब से शुरू हुआ है तब से हम लोगों ने ये देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होने लग गया है और ये पहले से भी था ये ऑनलाइन क्लासेस बट इट वाज बेसिकली प्रैक्टिस्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी नॉट इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज सो for public universities it has become a challenge. So in lieu of that, I would like to say that despite the audio features, the technology tools offering most people are the view that it can never replace classroom setting and human contact in real transmitting knowledge through technology. In response to significant demand, many online classes learning platforms are offering free access to their services, including platforms like Byju's, which are Bangalore-based educational technology and online tutorial firm founded in 2011, which is the world's most highly valued edutech company. Since announcing free classes on its Think and Learn app, Byju's have seen a 200% increase in the number of students using its products. From a university point of view, there are several ICT incentives of the MHRD, UGC, and the inter-university centers, information and library network, and construct for educational communication in the form of digital platform. These platforms can be accessed by the teachers, students, and researchers in the universities and colleges for learning. These ICT incentives, which have covered a broad range of subjects and courses, have been prepared by experts for providing an excellent learning experience to all. Some of the initiatives are SWAM online courses, which provides assessing of e-learning resources. These resources are earlier delivered on the SWAM platform. Student or learners who registered on SWAM in the 2020 can continue their learning as usual. UGC MOOC hosts learning materials for the SWAM UG and PG archives. E-content pathshalas are also there, highly quality, curriculum-based, interactive e-content containing over 23,000 modules in 70 postgraduate disciplines of social science, arts, science and humanities, natural and mathematical science. E-content of course in UG subjects are also available. That is for 87 undergraduate courses with about 24,110 e-content modules is available on CEC website. SWAM provides there and another initiative which has a group of 32 channels providing high quality educational curriculum based courses, content covering diverse disciplines such as art, science, commerce, performing arts and many other subjects which are run across the country for the e-learning. Then we have CEC, UGC YouTube channels which access to unlimited educational curriculum based lectures absolutely free. National Digital Library is also there for a vast amount of academic content in different formats and provides interface support for leading Indian languages for all academic level, including researchers and lifelong learners. All disciplines are popular for their access of devices and different abled learners. Shodhganga and another initiative, which is a digital depository platform of 260,000 Indian electronic theses and dissertations for research students to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community in open access for those students who are undergoing PhD and due to COVID. Right now they are unable to continue their PhD works, can carry on their work through Shodhganga and National Digital Library. eShodh Sindhu is also there, current as well as an archival access to more than 15,000 crores and a peer-reviewed journal and a number of bibliographic citations and factual database in different disciplines from a large number of publishers and aggregators to its member institutions. So these are some of the initiatives which are run by the MHRD for the benefit of the students so that the continuity of the education may be carried on. And we are the mentors who are regularly in the practice of online teaching to continue
to impart the knowledge and the sharing of informations. But there are still some of the challenges which are online learning which are facing. COVID-19 has forced universities across India and the world indeed to suspend physical classroom and shift to online classes. In India, while the transmission has been smooth for most private universities, the public one are still adapting. Online education is conducted in two ways. The first is through the use of recorded classes, which open out to public are referred to a mass open online courses. The second one is through live online classes like webinars, Zoom sessions, where we regularly contact the students and interact with each other in a prepared pedagogy. Universities require high-speed internet and education delivery platforms or e-learning management system. Besides IT infrastructure, and the faculty members may be comfortable to teaching online. Students also need high-speed internet and comfortable computers, mobiles to use this suggestion and watch pre-recorded क्लासेस. तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स को हम लोग कवर अप कर पाते हैं, but there are certain categories of students who are unable to use such access, and because of which they are unable to attend the classes, and this happens only when they are not participating in the online classes. According to survey, it has been found that IIT Kanpur revealed that 9.3% of its 2,789 students were not able to download material sent by the institute or study online. Only 34.1% of them had internet connection good enough for streaming real life lectures. तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है to a certain students, like according to the surveys of IIT, it has been seen कि IIT में जो जहाँ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया गया है या फिर रेगुलर प्रैक्टिस में हो रहा है, वहाँ सिर्फ 9.3% ही अपने स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर पाते हैं and then they can continue, and the rest of the students are unable to connect just because of good bad internet connection. Another survey by the local circle is an example where 25,000 respondents found that only 57% students had a required hardware. एक लोकल सर्वे के द्वारा यहाँ पे भी देखा गया कि 25,000 रिस्पोंडेंट जो थे उनमें से 57% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर से इंसेंस के कंप्यूटर्स और आपका राउटर्स है, प्रिंटर्स है, वो भी सफिशिएंट नहीं था कि जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू कर सके. So this we can say that it is a very big challenge for in India to continue with the online classes, because maximum of our students are surviving in 1G or 2G daily plan on their course, and for with this plan only they have to continue other works too. So online education में अगर हम बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी में मोस्टली 10 to 25% स्टूडेंट्स है आपके रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, एंड अदर्स वी कैन से दैट जस्ट दे आर कमिंग बट दे ओनली अटेंड द क्लासेस जिसका उनको लगता है कि हमको यहाँ कुछ बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज दे जस्ट स्विच ऑन म्यूट देयर ऑडियो एंड दे attend the classes. The online education is not easy as speaking into the microphone at one end and connecting a laptop or phone and listening in other. There are other challenges in this form education which are faced at both the spectrum. यहाँ हम अगर बात करेंगे तो दोनों स्पेक्ट्रम में जो दोनों तरफ से challenges है, मे बी स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में भी अगर देखा जाए तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. इवन हम टीचर्स की तरफ से भी अगर हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारा मॉड्यूल्स को यूज करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज हम करते हैं तो क्लास को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत इंटरैक्टिव बनाना होता है, जिसके लिए हमको पहले से प्लान आउट करना पड़ता है पर्टिकुलर डे के लिए, एंड देन किस तरीके से हम उसको इंटरैक्ट करें, जिसके लिए वीडियोस आप यूज कर सकती है, पीपीटी यूज कर सकती है. So with all this, we have to make the class very interesting and to attract the students to come into the online class in such a COVID situation. We cannot engage online in the same manner as we could
would be in a class. जैसे कि हम लोग रेगुलर क्लासेस में क्लास अगर हम लोग चला रहे हैं तो उस हिसाब से अगर हम लोग से बात करते हैं तो रेगुलर क्लास की तरह इसको हम लोग ऑनलाइन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो जो रेगुलर चीज हम लोग अगर क्लास में हम लोग बता रहे थियोरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता था रेगुलर बेसिस पे, तो हम लोग ऑनलाइन में अगर उसकी देखा जाएगा तो ऑनलाइन में क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस कर पाते हैं, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम लोग बहुत हद तक उसको कवर अप नहीं कर पाते। उनकी जो क्वेरीज होती है, उनके जो डाउट्स होते हैं, प्रैक्टिकल डाउट्स होते हैं, तो उनको हम लोग क्लियर आउट नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत अगर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस को अगर हम बात करेंगे तो इट हैज सर्टेन मेरिट्स एंड in terms of teachers also as a student also, because it allows innovative method of teaching with the help of technology and online tools, allows reaching out to a large number of students across geographies, especially useful for distance learning. ये जो टेक्निक है ये स्पेशली डिस्टेंस लर्निंग के लिए है, और ये इसमें क्या होता है ना, द एबिलिटी टू लर्न यूजिंग डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स एंड मेथड्स भी है। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो सामने जो स्टूडेंट्स है वो भी डिफरेंटली इस टूल्स को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए होना चाहिए। ही शुड बी वेरी फ्रेंडली टू द दोज टूल्स एंड टेक्निक्स। देयर शुड बी नो डिसरप्शन इन लर्निंग बिकॉज ऑफ द pandemic, listening to the recorded and live conversation and working at their own speed है। तो ये आपका एक बेनिफिट है, आपका एक मेरिट्स हो जाता है आपके टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द स्टूडेंट, बट इट हैज सम डिमेरिट्स आल्सो। ऑनलाइन टीचिंग टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस। हर एक टीचर ऑनलाइन क्लास में एक पर्टिकुलर कंटिन्यूटी फ्लो में क्लास नहीं ले पाता। रेगुलरली एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरे क्लास पे सिटिंग एंड देन तीसरा क्लास, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर टेकिंग वन क्लास teacher has to prepare lots and lots of things. There is a little concept of how student can be evaluated in fair manner. Inability to have face-to-face contact with students and facilitate free conversations में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि हम लोग लाइव क्लासेस में क्या होती है ना कि आप स्टूडेंट्स को फेस टू फेस इंटरैक्ट कर पाते हैं, तो वी कैन हैव अ फेस रीडिंग एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट मे बी he or she wants to say. But in online classes all these things are not possible, so we cannot judge the students what he is or she is thinking about the class and how much she has or he has grasped the matters that has been discussed in the class. Inability to reach all the student because of technology, limited technology तो बहुत बड़ा ही limitations होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास या हर स्टूडेंट के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है from because students come from all backgrounds, so they cannot afford to have such a new plans like 4G and 3G they cannot afford, and lack of free flowing conservation debates and discussions भी possible नहीं हो पाते। जैसे कि हम लोग क्लास में रेगुलर डिबेट्स या डिस्कशंस रखते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, बट मे बी इन फ्यूचर इट कैन बी अप्लाइड। तो अभी इनिशियल स्टार्टिंग में ये नहीं हो पा रहा है, बट जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, मे बी हम लोगों के लिए ये फ्यूचर में थोड़ा एडवांटेज हो जाए। टेक्नोलॉजी डिफिकल्टीज रिलेट टू वीक डिवाइसेस और एक्सेस टू द इंटरनेट होता है। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गेटिंग यूज्ड टू टेक्नोलॉजी एंड बीइंग इवैल्यूएटेड ऑनलाइन, इवैल्यूएशन करना भी पॉसिबल नहीं है। स्टडिंग वाइल्ड लाइफ लिविंग ऑन होम with family and other discussions also distract the education. So if we talk about how it is an effective for those who don't access to the right technology, there is evidences that learning online can make more effective in a number of ways. Such research shows that an average student retain 25 to 60% more material when learning online compared to 8 to 10% in a classroom. This is mostly due to the students being able to learn faster. E-learning requires 40 to 60 less time to learn than in traditional classroom setting, because students can learn at their own pace, going back and e-reading, skipping and accelerating through conceptual as they choose. Nevertheless, the effectiveness of online e-learning classes varies among the age group too. The general concept on children, especially younger ones, is much structured environment is required because kids are more easily distracted.
To get full benefit of online e-learning, there need to be concentrated effort to provide this structure and go beyond replicating a physical classroom lecture through video capabilities, instead using a range of collaboration tools and engaging methods that promote illusion, पर्सनलाइजेशन एंड इंटेलिजेंस सो लास्ट में अगर से मैं कंक्लूड करना चाहूंगी तो मैं बस इतना ही करना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस है ये एक सब्स्टिट्यूट मेथड है इट कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ लाइव क्लासेस दैट वी आर टेकिंग इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो इस मेथड से जनरली बस हम लोग एक पैंडेमिक सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हैं और इसको अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं भविष्य में भी तो हमको अपना जो टीचिंग प्रैक्टिस मेथड्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करना होगा प्रॉपर्ली प्लान आउट करना होगा ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि फ्यूचर में उसको हम आगे कैरी ऑन कर सके तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू शेयर थैंक यू Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Hello? Sunita. Hello. Thank you, Dr. Sunita. You have presented wonderfully. हेलो Data back present. Hello. Are you able to listen to me, Dr. Sunita? यस Hello. मैम Hello. हाँ Thank मैम you. Yeah, I want to say thank you to you. This was a power-packed, data-backed presentation. Wonderful one. Thank you very much. And I also thank our delegates who have been with us throughout. Even there was some small problem, they were with us and our delegate support matters a lot to us. Thank you, delegates. So today's technical session is over. We will be meeting again tomorrow. There will be 2 plenary sessions tomorrow. One will be taken by Director UGC HRDC University of Hyderabad, Professor Y. Narsimhulu, and other plenary session will be taken by Director CTR and TI, Dr. Zwedamis Khan. Thank you very much, delegates. We will meet tomorrow. Thank you once again.